Ladies and gentlemen, today we have this basic class of English grammar, and we have to see that how our speaking and writing is grammatically correct. Grammar gives us the opportunity to speak and write correctly. Grammar is not knowledge only to read and understand, but also to apply it. This is important. Many people think that grammar is like a study material, so I will be reading grammar and I will be applying grammar, but that is not the case. Grammar is something very, very practical. We speak and write our own language without grammar books. Same can be done for English as well. And if we speak and write our mother tongue, so similarly we can also do for the English. We need environment and we need a lot of practice. We need environment and a lot of practice if there is no grammar. So please write a comment. If I have environment and constant practice, there is no need of grammar. If I have environment and constant practice, there is no need of grammar. There is no need of learning grammar. Grammar is already there, but there is no need of learning grammar. मतलब ये है कि अगर आपके पास माहौल है और आप मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की हमारी मादरी जबान है. Our mother tongue, we don't need environment, we don't need grammar learning, because we have environment and constant practice. As Nuzaina Mukhtar has written, if I have environment and constant practice, there is no need of the learning of grammar. So I hope you got the message. अगर आपके पास माहौल है 24 घंटे और आप मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है. As we don't have environment of English and we don't practice English constantly, that's why we need to learn grammar. क्योंकि माहौल नहीं है और हम मुसलसल प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो इस वजह से हमें ग्रामर सीखने की जरूरत है. One point. Point number 2. What is grammar? Grammar is, in simple language, grammar is the rules of language. The rules of language. ज़बान की जो rules है, जो उसूल है, that is called grammar. Rules of language. And in more scholarly manner, grammar is morphology, syntax, semantics, phonology. And sometimes we add pragmatics and phonetics. ये नोट्स में मैंने आपको ये सारी चीजें दी है. ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में ग्रामर क्या है? रूल्स. आपको उसूल आनी चाहिए. He goes, I go. He के साथ goes आता है, I के साथ go आता है. ये रूल है, उसूल है. कभी कभी उसूल की वजह नहीं होती कि क्यों इस तरह है, बस है. So grammar is the rules of language. Technically speaking, professionally speaking, scholarly speaking, grammar is morphology, syntax, semantics, phonology, pragmatics, and phonetics. Morphology, syntax, semantics, phonology, phonetics, pragmatics.
तो इन 6 चीजों का नाम ग्रामर है. नाउ नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी. Morphology. So morphology is the structure of words. The structure of words. And we have prefix, we have suffix, we have stem or root, and then we have inflection in morphology. In morphology we have prefix. For example, development. So D, that is prefix, sabiqa. Walab, that is root or stem. Mant, that is suffix. Sabiqa, lahiqa. And then we have inflection. So we can say that grammar is the name of inflection. Another simple definition of grammar is that grammar is inflection. Grammar क्या चीज है? Inflection है. Inflection. Okay, inflection means the changes to the words. Changes to the words. अल्फाज में जो changes होती है, that is called inflection. मसलन go है, go, तो गो को हम कितना चेंजेस करते हैं. गो के साथ कितने चेंजेस हो जाती है. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. तो ये जो अल्फाज एक लफ्ज में चेंजेस आती है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेक्शन. सो वी हैव So grammar is basically inflection. So when we change words from one form to another form, this is called inflection. So grammar deals with inflections. That how to change words according to situations. मसलन उर्दू में अगर मर्द है तो हम कहते हैं मर्द आता है. अगर औरत है तो हम कहते हैं आती है. तो आता, आती, दिस इज इनफ्लेक्शन. दिस इज इनफ्लेक्शन. इंग्लिश में ये नहीं है. मैन कम्स, वुमेन कम्स. लेकिन इंग्लिश में ये इनफ्लेक्शन है. ही कम्स, आई कम. ही के साथ कम्स आता है, आई के साथ कम आता है. अच्छा, मर्द आया, सो आया, आता, आया. तो आया जो है दिस इज पास्ट, तो ये भी चेंज हो जाता है. मैन केम, वुमेन केम. तो इंग्लिश में कम से केम बन जाता है. ही हैज कम. अब हैज आ गया तो उसके साथ कम आ गया, क्योंकि इंग्लिश में कम, केम, कम है. उर्दू में आता है, आया, आया था या आया है. So these changes need a lot of alacrity. Alacrity means a lot of activeness of mind. बच्चों से गलतियां क्यों होती है? क्योंकि बच्चों इतना तेज उनका ज़हन नहीं होता कि यार मर्द के साथ क्या बोलना है, औरत के साथ क्या बोलना है, वाहिद के साथ क्या बोलना है, प्लूरल के साथ क्या बोलना है. ये बहुत ज्यादा दिमाग पे बोझ डालते हैं ये चीज. तो इसके 2 तरीके हैं. इंग्लिश मत लिखो, मत बोलो.
उर्दू बोलो, अपनी जबान बोलो, दूसरे के दिमाग पे जोर डालना है so that you speak correctly. Examiner doesn't exempt you from grammatical mistakes because grammatical mistakes are unpardonable. जिस तरह कि 2 जमा 2 मसाई 5 नहीं होता, इसी तरह आप ग्रामर की गलती नहीं कर सकते. You cannot make grammatical mistakes. You have no choice. We have the theory of free will and determinism. ये जो एक मशहूर थियरी है कि इंसान आजाद है या इंसान जो है वो पाबंद है. फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म. ठीक है, इसको क्या, फ्री विल आजाद एंड डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म क्या है कि इंसान पाबंद है, जो चाहे सो आप करे, हमें अबस बदनाम किया. इंसान जो है वो पाबंद है और इंसान जो है वो आजाद है. प्लीज राइट फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म. दिस इज अ वेरी बेसिक डिस्कशन. किस्मत क्या है, तकदीर क्या है, लक क्या है, ये चीज बातें है ना, ये इस टॉपिक में आते हैं. फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म. सो ग्रामर में डिटर्मिनिज्म, इन ग्रामर देयर इज डिटर्मिनिज्म. इन ग्रामर में आप मजबूर है. दो देयर इज अ ह्यूज हीव एंड क्राई अगेंस्ट ग्रामर. ग्रामर के खिलाफ बहुत ज्यादा बगावत भी होती है, रिबेलियन, रिवॉल्यूशन, नहीं मानते, जुल्म की ज़ाब्ते, ये क्या बकवास है, किधर हम फंस गए. बट इट इज स्टिल देयर क्योंकि इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन. ठीक है ना, मैं कहता हूं वो आया तो हम समझते कि यार कोई मर्द आ रहा है, तो फिर मर्द के हिसाब से हम तैयारी करते हैं. वो आई तो हम समझे कि औरत आ रही है. ठीक है, तो ये डिसिप्लिन लाता है लैंग्वेज में. अगर हम अपनी मर्जी, तो हमें नहीं पता होगा क्या ही केम, ही कम्स और ही विल कम. क्या वो आया था या आया है या आएगा. सो देयर विल बी कियास. व्हेन देयर इज नो ग्रामर देयर विल बी कियास. अगर ग्रामर नहीं है तो कियास होगा, CHAOS, कियास. कियास मीन्स डिसऑर्डर, बद निजामी, बद इंतजामी, डिसऑर्डर, बेतरतीबी. सो देयर विल बी डिसऑर्डर, बेतरतीबी आ जाएगी. फिर जो जिसके मुंह में आए जिस तरह बोला. ये क्यों हम हंसते हैं लोगों पे कि उसने गलती की ग्रामर में, और घोड़ा घास गाती है और जी ये वो सारा. तो वो इसलिए कि ग्रामर जरूरी है. Without grammar, there will be chaos. So let us promise that today onward, our writing and speaking will be grammatically correct because it is inevitable, unavoidable, indispensable. Grammar is unavoidable, indispensable, inevitable. Grammar जो है ये क्या है, नागुज़ीर है. नागुज़ीर के हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, इनएविटेबल, अनएवॉइडेबल, indispensable. Now, morphology is prefix, suffix, inflection. Syntax, that is sentences. Semantics, that is meaning. Phonology, phonetics, that is about sounds, pronunciation. Pragmatics is language in context. Language in context. सियाक व सबाक में लैंग्वेज चेंज हो जाती है. ठीक है ना. अगर तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है और तुम हाँ रामी के बच्चे किधर हो तुम कुत्ते, क्या हुए, तुम्हारी माँ, तुम्हारी ये, तुम्हारी वो,
तो अगर तुम्हारा दोस्त है तो तुम हंसोगे, अगर वो दोस्त नहीं है, कोई पराया बंदा है, तो तुम उसको मारोगे. सो दिस इज कॉल्ड pragmatics. अगर अपनी माँ कोई बात करती है कोई बात नहीं, कोई और माँ वही बात करती है तो फिर अब झगड़ती है. सो दिस इज pragmatics, language in context. So these things we study in grammar. Now another definition of grammar is that grammar is the name of parts of speech and sentence. Parts of speech and sentence. Grammar जो है ये parts of speech और sentence का नाम है. It is not composition. It is not communication. It is not essay writing. It is not praising. Grammar जो है सिर्फ दो चीजों का नाम है. Grammar is parts of speech and sentence. Parts of speech means parts of language. Because previously most of the languages were spoken, so we use the word speech. कभी आपने सुना है कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? स्पीच का मतलब है स्पोकन, ये वो तकरीर वाला स्पीच नहीं है. स्पीच मीन्स स्पोकन. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज स्पीच प्रॉब्लम्स, उसको बोलने का मसला है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीक मीन्स पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज. नाउ व्हाट आर पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज? Part of language is word. Word is part of language. जो word है, लफ्ज, ये language के हिस्से है. And we have 8 classes of words or parts of speech. जो अल्फाज है उसके 8 हिस्से हैं, 8 किस्में हैं. Noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection. तो ये जो 8 पार्ट्स है या 8 क्लासेस है या 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, ये 50% ग्रामर ये है. और फिर इन अल्फाज को हम इकट्ठा करते हैं, so then it becomes parts of speech. When we bring them together in one sentence, then it is called sentence. या ये अलग-अलग अल्फाज होते हैं, so that is parts of speech. या इसको हम इकट्ठा करते हैं सेंटेंस में. So sentence and parts of speech, that is called grammar. Now the last point is, if you have any questions, so please ask. Today I promise that the class will be very short. We will do Pakistan Affairs class tomorrow. If you want to watch the match, I don't know what happened in the match. Anybody knows how many overs are there? So the last point is parsing. I made my grammar 100% correct because of parsing. Parsing is a wonderful exercise. In today's notes, I have given you the definition and examples of parsing. P-A-R-S-I-N-G. मेरा ग्रामर कैसे ठीक हो गया? पार्सिंग के थ्रू ठीक हो गया. Parsing means to identify the grammatical category of each word or phrase or clause. जितने भी अल्फाज हैं तो इसका ग्रामर में एक नाम है. उस नाम को समझना जो है, दिस इज कॉल्ड पार्सिंग. Dividing language into different parts and name it grammatically. मसलन मैं कहता हूं drink, I drink tea या I take tea. तो ये जो I है इसको ग्रामर में क्या कहते हैं? ड्रिंक को ग्रामर में क्या कहते हैं? टी को ग्रामर में क्या कहते हैं? This is called parsing. So please read the notes. Okay, Pakistan needs 63 runs in 53
out of 53 balls. Okay, so let us finish it. Please read the notes. आज की बड़ी जबरदस्त नोट्स मैंने आपको दी है, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है ग्रामर के हवाले से. So let us read those notes and let's go now to Safe Essay Classroom for introduction to the essay topic. Now, what is this? Parsing. I take tea. I drink tea. I is pronoun. Drink is verb. Tea is noun. इसको पार्सिंग कहते हैं कि आई ग्रामर में क्या है. अच्छा, आई का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट. ड्रिंक टी का दूसरा नाम क्या है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट. अच्छा, दिस इज अ गुड ड्रिंक. ये बड़ा अच्छा ड्रिंक है. तो यहां ड्रिंक बिकम्स नाउन. ये समझना बहुत जरूरी है. ड्रिंक हमेशा वर्ब नहीं होगा. इट इज अ गुड ड्रिंक. कोका कोला इज अ बैड ड्रिंक. तो यहां जो ड्रिंक है वो नाउन है. आई ड्रिंक कोका कोला, तो ड्रिंक जो है वो वर्ब है. सो वन वर्ड कैन बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक वर्ड जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं. What is the difference between subject-verb agreement and inflection? Now, subject-verb agreement is only subject-verb agreement. He goes, I go. He के साथ goes आता है, I के साथ go आता है. तो ये subject-verb agreement है. Agreeing, that is which verb and which subject agrees with each other. Inflection is a wider thing. अल्फाज में जो भी चेंजेस आते हैं उन सबको इन्फ्लेक्शन कहते हैं. ये तो सिर्फ सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की बात हो रही है. तो ये भी एक किस्म का इन्फ्लेक्शन है, लेकिन इन्फ्लेक्शन जो है वो एक वसी अप्रोच है. सो प्लीज रीड द नोट्स. नोट्स को दोबारा पढ़ें. वहां मैंने इन्फ्लेक्शन का भी जिक्र किया है, उसमें एग्जाम्पल्स भी दी है आपको. प्रीफिक्स, सफिक्स, पार्सिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, ये तमाम चीजें आपको नोट्स में एक्सप्लेन है. इफ यू हैव एनी इशू विद द नोट्स, जो नोट्स का जो पोस्ट है उसी पे आप मुझसे क्वेश्चन करें और मुझे टैग करें. सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. So see you now in Safe Essay Classroom.